टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Firstly, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Myself, Sandeep Saini from Ramgarh, Shekhawati, West Rajasthan. I completed my schooling from RBS Board, in which लिटिल I बिट scored लाउडर, 60. लिटिल बिट लाउडर। आप थोड़ा एयरफोन को ऊपर करके, हाँ लिटिल बिट लाउडर। Yeah. So my name is Sandeep Saini from Ramgarh, Shekhawati, which is a place in Rajasthan. I completed my schooling from RBS Board, in which I scoring 66% 10th standard and 63% 12th standard. I completed my articleship from Shayan Taparia, Mumbai, which is a mid-sized firm. During my articleship, I work in state audit, tax audit, internal audit, in which I work in uh, art, hello. यस यस कंटिन्यू। So in which I working of various manufacturing company, infrastructure company, textile companies, media companies, service industries, and many more they are doing. And in which I work in test of controls, walkthrough process, analytical review, test of details, and audit of revenue, audit of fixed assets, audit of trade receivables, trade payables, and audit of revenue, operating expenses, capital expenditures, and many more, sir. के बाद आई वांटेड टू जॉइन अ कंपनी बिकॉज Okay. वीडियो देखे थे ना, आई टोल्ड यू आई वांटेड टू जॉइन अ कंपनी। आप कंपनी के बारे में बताएंगे ना, ये तो अपने बारे में बताए। आपको कंपनी के बारे में क्यों ज्वाइन करना है तो ये वो देखिए। मैंने देखा नहीं पोर्शन में। हाँ। वीडियो को अच्छे से देखे, तो नहीं वीडियो 4 बार बोली थी देखने के लिए आपको। नहीं, आई वो वांटेड वीडियो टू में आया जॉइन अ नहीं वो कंपनी। पोर्शन। I wanted to join a company because I was deeply interested in this profile. The culture is good. I wanted a deep interest in this particular profile. वो बोलना पड़ेगा ना, ओके ओके। बोलिए। So I wanted to join your company go and check the domain और मिस आई सर ये सब मैंने प्रिपेयर नहीं किया, सुना नहीं, मैं देखूंगा वो एक दो बार। लिख लीजिए ये हाँ चीज। हाँ। आई वांटेड टू टेल मी समथिंग आउट ऑफ सेल्फ, प्रॉपर्ली होना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करिए, मुंह से बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेकार है आपका। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है, और ऊपर से जो आप बोल रहे थे वो लग रहा था कि रटा वाला है, तो वो चीज को एकदम वो लोग डीप जाएगा तो आप फिर वो दिक्कत आएगा। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर्ली आपको 5-6 बार बोलना पड़ेगा। ठीक है, ओके। व्हाट इज एनालिटिकल रिव्यू यू मेंशन्ड? Analytical review approach to prepare the financial information of the जो आप बोल रहे हैं ना, financial माइक को asset। ऊपर करिए, माइक को ऊपर करिए, आपको आवाज नहीं आता है। हम्म, 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 हेलो। हाँ आ बोलिए। रहा है सर। जिसको सर निकाल ही दीजिए, नहीं तो वैसे देखिए कि आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। ठीक है, वो दिक्कत देगा पूरा आपको। आवाज नहीं आएगा। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। यस सर, आस्क द क्वेश्चन। एनालिटिकल रिव्यू। सर, analytical review is the process to identify the assets of the financial information and identify the unrelated and undetected relationship between the financial and non-financial data. In analytical review, we use the trend analysis, ratio analysis, and statistical technique of the various technique to compare the financial results of the previous year to current year. Only to And the the audit of fixed assets. first, how do you do it? So firstly, reconcile the fixed register with the general register to ensure the completeness of the fixed register. And then the recalculation of the depreciation as per company's act and scrap value, and the test of develop addition and the division of the new assets to ensure the completeness of the fixed asset register, and for the आप जब existence बोल of रहे हैं ना, two आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो आपका आवाज, आप खुद को बोल रहे हैं तो मैं पता नहीं, पर एक इंटरव्यूअर को आपका आवाज नहीं आएगा। तो प्लीज वो चीज याद रखिए। तो ये आपको दिक्कत देगा ये चीज। तो थोड़ा आपको आगे लाइए माइक को, अगर आपको हो रहा है ना तो माइक को आगे लाके बोलिए। आपका आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रहा है तो आपको दिक्कत आ जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, दूसरा चीज, आप थोड़ा स्लो बोलिए, थोड़ा आदमी को समझ में भी आए। मतलब आप बहुत फास्ट बोलने का कोशिश कर रहे हैं, वो एक चीज या इंप्रूव करिए। तो ये चीज आप लिख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ भूल जाएंगे जो जो चीज बोल रहा हूँ। एक तो माइक को आगे लाके बात करिए जब भी आप बोल रहे हैं। दूसरा चीज, स्लो बोलने या का कोशिश करिए कि आदमी को समझ में भी आए, दूसरा आदमी को कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप रट के आए, रटा टक 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 बोलने का वो वाला चीज हो रहा है। ये होता है जनरली ओके ऑन पर्सन इज पैनिकिंग। तो वो थोड़ा स्लो बोलिए। या और हाँ, और इधर उधर मत देखिए, जब आप बोल रहा है ना तो मेरे को देखिए डायरेक्टली, और मेरे को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये 3-4 चीज आपको ओके इम्प्रूव करना है, समझ गए ना।
मेरे को देख के आई कांटेक्ट होना पड़ेगा मेरे पास, धीरे धीरे बोलना है, मेरे को समझा रहे हैं कोई चीज, मेरे से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेरे को देख के नहीं बोल रहे तो ऐसा लग रहा है कि भाई अलग लग रहा है, समझ रहे हो ना? अभी मैं आपको वो देख के बोल रहा हूँ कि ऐसे यहाँ पर देख के बोल रहा हूँ। समझ रहे हो? हम्म, तो दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल दैट इज यू नीड टू इम्प्रूव ऑन। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। वो हाउ विल यू डू द ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिर से बोलिए। So firstly, we reconcile fixed asset register with the general ledger, and then after we recalculate the depreciation of as per company's act and scrap value, and test of details of the new addition and the deletion to ensure the थोड़ा सा complete आगे of the करिए fixed माइक को, asset ठीक है register. आपका? माइक को थोड़ा आगे Hmm. करके बोलिए, हाँ। आपको खुद को आवाज आ रहा Okay. है? आपको जोर से बोलना पड़ेगा, आपको गला को तो जोर से करिए, पैसा नहीं मिलेगा अभी करके आपको, और 10 पैसा देने वाला है, Sir, तो थोड़ा जोर बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है, हाँ। हाँ, and the test of details of the new addition and the deletion of the fixed asset to ensure the completeness of the fixed asset register. And for the existence, we check the physical verification of the fixed assets. And for the valuations, we check the fixed assets value as per the index 16. And for the presentation disclosure, we check the fixed assets are disclosed and presented as per the index 16 schedule 3. इंडिया 16 क्या चीज का है? व्हाट इज इंडिया Property 16? plant and property plant and equipment. ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड amortization? So depreciation applied on the tangible assets like PPE and fixed assets हो गए, and amortization applied on the intangible assets, patent, copyright, trademark, goodwill. So depreciation is impact on the total expenditure income statement, and amortization is shown in the balance sheet item. And the depreciation is recurring in nature, and amortization non-recurring in the nature. And so while calculate depreciation, we consider the salvage value of the fixed assets, and while calculate amortization, we don't consider the salvage value of the fixed assets, मतलब intangible assets. व्हाट इज deferred tax asset? So deferred tax asset in when the carrying amount of the books is less than the tax base amounts. In deferred tax, the tax expenses are recoverable in the future periods. जी जी, इम्प्रूव करना है deferred tax asset। What is the discount rate that is used in the books of lesser? In say IRR of the lessors, और and secondly increment borrowing rate IBR. okay, First priority IRR. what is the formula of impairment? Carrying amount of the fixed assets into जब आपको recover आंसर नहीं carrying पता होगा amount आप सोचिए मत, आप बोल दो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ। आप इतना टाइम carrying इन्वेस्ट amount. मत करिए। सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। Okay, तो नहीं, so carrying amount less recoverable amount. हाँ, अगर आपको सोचने का टाइम तो दीजिए, पर ज्यादा समय लेगे तो आपको वो फिर आउट कर देगा। ठीक है, तो बोलिए आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। व्हाट योर मेजर ऑब्जर्वेशंस इन आवर आर्टिकल सी पीरियड? So when we conduct the physical verification of fixed assets, we find that many of the assets are not the same company which are shown in the books of accounts. In books of accounts, many assets are shown in the मतलब, more amount. मतलब major fixed assets are shown the more amount, and then we take the physical verification, then show the fixed assets are very less amount. ओनली वन ऑब्जर्वेशन। And दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट yeah, क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी yeah, you have इंपॉर्टेंट to. क्वेश्चन। यू नीड टू हैव एटलीस्ट 7 to 8 ऑब्जर्वेशंस। तो लिख लो 7 to 8, उसमें दिया भी था एक्सेल सीट में, 7 to 8 ऑब्जर्वेशन होना पड़ेगा आपका आर्टिकलशिप में, स्टेट ऑडिट रिलेटेड, इंटरनल ऑडिट रिलेटेड, जो भी प्रोफाइल में जा रहा है 7 to 8, तभी आपको लेगा वो, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देगा कहीं तर भी। इसलिए याद रखिएगा 7 to 8 ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसको लगेगा आर्टिकलशिप नहीं करके आया फिर।
खाली नॉलेज तो गूगल से भी देके कोई भी दे देगा, यूट्यूब देख के कोई भी नॉलेज दे सकता है, पर आर्टिकलशिप हम्म। देखेगा ना अल्टीमेटली, तो आर्टिकलशिप का वो नहीं दिखेगा तो फिर लेगा वो, समझे, वही चीज है। Okay, you have mentioned in the resume Ind AS 37, okay, and you have done the verification of provision as per Ind AS 37. Which type of client it was, and how you did to verify it as per the Ind AS? Provision as a provision recognized in the current liability, which is a occur in the past events, and so provisions the amount of the provision is measure sufficient reliabilities. So you have written in So your इसके बाद resume that you have verified the provision as per the Ind AS 37. So what type of client it was where you did this? What was the whole scene? I wanted to know that. सर इसके बारे में वहाँ क्या बोलना पड़ेगा प्रेजेंट करने के लिए? तो आप लिखा सीवी में, हम कैसे बताएं? You have already mentioned the CV. You जैसे cannot हमने lie on the CV. या ओके ओके यू कैन नॉट लाई ऑन द सीवी। इन डेज 37 आपका लिस्टेड क्लाइंट वगैरह में जल्दी से लगेगा, राइट? यू कैन नॉट राइट एनीथिंग इन हाँ सीवी, पकड़ लेगा आपको, समझ रहे हैं ना? ओके लिखना भी तो या देख के लिखना है, ज्यादा लिख देंगे तो प्रॉब्लम है, कम लिखने कमती भी नहीं लिखना है, पर इतना भी ज्यादा नहीं लिखना है कि वो उसको लगे कि भाई, या समझ रहे हैं ना, कि होमवर्क में वो लोग जानता है कि कहाँ पर इंडेस अप्लाई होता है। अब जो फॉर्म से करके आया तो उनको आइडिया है कि कहाँ पर इंडेस अप्लाई होगा, कहाँ पर नहीं होगा, राइट? तो भी इसको या प्रिपेयर करने के लिए कहाँ से देखूंगा? आप ये लिखा किसका, जिसने आपको बोला था ये लिखने के लिए, उसको पूछिए ये क्यों लिखा है, ये चीज हटाइए ये सीवी से। तो आप कुछ बोल नहीं ओके ओके सकते। गलती कर दी है सीवी में या लिख के, ये सब चीज के या ऊपर में वो ओके पूछेगा आपको, पूरा अंदर पूछेगा वो, ये सब चीज को लेके। और दूसरा, ओके, यू हैव डन द इम्पेयरमेंट टेस्टिंग एज पर इन डेज 36। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव चेक्ड इन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग? so it's like the breakdown इंडेस of लिखना the ही नहीं चाहिए था आपको machinery. सीवी में, पूरा इंडेस आप भर्ती कर दिए एकदम। इंडेस आपने इंडेस अप्लाई किया आर्टिकलशिप में? ऐसे इम्पेयरमेंट चेक किया है मैंने कंपनी में, जैसे ब्रेकडाउन ऑफ द मशीनरी हो गई, इंडेस अप्लाई किया था? डैमेज ऑफ द इंडेस अप्लाई, मशीनरीज. इंडेस अप्लाई हुआ था? या कि व्हाट इज द टर्नओवर, वो कंपनी का टर्नओवर कितना था जिसमें आपने इंडेस अप्लाई किया था 36? 1500 करोड़. 1500 करोड़, ओके। क्या टाइप का सेक्टर था, विच टाइप ऑफ सेक्टर इट वाज? इंफ्रास्ट्रक्चर. हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में क्या क्या चीज चेक की है, बताइए। डैमेज ऑफ द मशीनरीज एंड जैसे प्लांट है तो कोई प्लांट एकदम से खराब हो गया, उसका वैल्यू नहीं रहा है उसका, प्रॉपरली फिर उसको एक्सप्लेन सेटअप इट, करने के. वो भी इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करना है उसको, कि क्या आप ही लिखा है ओके सीवी में। वो तो सीवी को लेके आपका ग्रिल करेगा सीवी में आपका, ही विल ग्रिल डाउन द सीवी, वट एवर यू हैव रिटन ही विल ग्रिल डाउन, कि एक्चुअली ऐसे लिख दिया कि हाँ। और अब आप इतना हाई फाई वर्ड्स लिखिएगा तो और ज्यादा वो ज्यादा ग्रिल करेगा। एक वर्ड में पॉइंट ना, बात समझ या रहे? एवरीथिंग हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना, न्यूटन्स लॉ। या तो आपको तो ये पढ़ के रखना पड़ेगा कि ये सब आप पूछेगा कि व्हाट यू हैव डन एक्चुअली आउट हियर, ये एकदम होने वाला है आपके साथ कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इतना लिखा है ना, ठीक है। You drafted audit report, okay? Okay. What are the elements in an audit report? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड IFCs, कारोस, What is IFC? internal financial controls. And IFC is applicable on the listed entities and unlisted company whose turnover is paid up security 50 crore or more and deposit from public से 25 crore or more. What is the difference between IFC and IFCR? सर ये नहीं पढ़ा, लिख लो। एक्सेल शीट में था. IFC वर्सेस IFCR में क्या डिफरेंस है, ठीक है? ओके. सीवी को स्टडी करिए आप, सीवी से बहुत सारा सवाल पूछेगा आपको, यू नीड टू स्टडी सीवी प्रॉपर्ली।
Hmm. Checking your cash and bank balances, okay? What are the procedures that you checked in cash and bank balances? So firstly, we take all the bank confirmation bank statement from the clients, and then after we reconcile the bank statement from the books of accounts and independent external confirmation to the all banks to ensure the accuracy of the bank accounts, and we check the all account confirmed by the bank certificate to show in the books of accounts, and management certificate for the cash in hand and item of the audit of the item standing and reconciliations. Okay, okay, tax audit amendments. What are the tax audit amendments? So firstly, clause 44 expenditure explanation. What does clause 34 says? 34 is the TDS, bifurcation of TDS. TDS. Clause 40. Bifurcation of clause 44. Clause 44 is explanation of the expenditures Of what? on which GST applicable or not, unregistered, Right. unregistered. Okay. What is fund diversion and siphoning? You have written in CV fund diversion and siphoning. What is that? How did you detected fund diversion and siphoning? So fund doesn't mean fund and loan advances are transferred to the one company to another company. Example, transfer to subsidiaries, joint venture, and associates without any limitations, without any documentations in What abroad. is siphoning? Siphoning. What do you mean by siphoning? You mentioned in the CV siphoning. What is that? So I think another word of the fraud. Kindly explain me. I don't understand what is siphoning. So when the company is transferred to the fund of another subsidiary joint venture, which are the other situated in other countries, where is no tax is levied on funds. What was the exact scene in your article, CV? How you did this? How you detected this? Give me an entire story about it. क्या sir? Give me an entire story about how you detected this siphoning of funds and fund diversion. So I audited the media companies, which is a subsidiary in Singapore, and the company had transferred the more amount of the fund to the subsidiary companies without any sources, documentations, and without a registration letter of the subsidiaries companies where it is shifted. What is walkthrough? So work to test the process used during an audit of the client entity's accounting system to check its reliability. System step by step from starting till the end. What is cash loss? Cash loss is identified by net profit after tax less any amortization, depreciation, and impairment. In daters, okay. If you don't get the confirmation from the daters, what will be your procedure or the alternative audit procedure? We perform alternative procedure if any we don't receive any confirmations response, and we plan the risk. We update the plan of the audit planning and risk of material misstatement according to the response, and we check the subsequent search and EVA bills, bank statements. What will you do in case if you are not getting the confirmation from the banks?
check the reconciliation of the all the accounts and after 30 March and check the any payment receipts after 31st March. इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा इसका? We'll tell you after the session. What is MRL? So MRL is a audit document given by the auditor to the auditor and as a audit evidence. In MRL, the separation of the responsibility of the auditor and the auditees and is essentially the latest state that the information provided by the management is correct. What is the difference between MRL and LOE? No idea, sir. Write it down. LOE and MRL, letter of engagement. स्टार्टिंग में देता ना लेटर ऑफ एंगेजमेंट क्लाइंट को. हाँ, engagement letter. What is UM paragraph and OMP paragraph? MP's metagraph is a metagraph which including the audit reports related to the matter disclosed in the financial statement, and this is auditor judgment is significant for the user of the financial statements. And example for subsequent event occupation date of financial statement has audit report, any litigation, regulatory future outcomes. Do you have any questions for us? Yes, sir. What is the growth opportunity in your company for me, and how many member of the team in which I work, and what is the role and responsibility of the What do due you to my understand work? by growth? What do you understand by growth? So growth means related to work. In terms of earnings? Yeah. My HR will tell you that. Okay, it was good. Okay, come to the same link and okay, I'll give you the feedback. Yeah.